Good morning, students. Today I will complete the last point of the mechanism of transcription, that is post-transcriptional changes. So my chapter is same, that is chapter 6 of class 12 biology, that is molecular basis of inheritance. Chapter 6, molecular basis of inheritance. Okay, and this molecular basis of inheritance, the chapter today to which we go through is molecular basis of inheritance. Topic, what is the topic? The topic is continued, and the topic is mechanism of translation या transcription. Mechanism of transcription. What is transcription? The process of copying genetic information from the template strand of DNA into RNA is called mechanism of transcription. Okay, now how this transcription takes place, how RNA synthesis takes place. Okay, we go through this, and the last step is, that is seventh step, post transcriptional changes. Post transcriptional changes. Post transcriptional changes में क्या होगा? The primary transcript which is formed in the transcription process undergo changes to form a functional transcript, that is called secondary transcript. So post transcriptional processing is required. Post transcriptional processing is required to convert what? To convert primary transcript. To convert primary transcript of all types of RNA, of all types of RNAs into functional RNA, into functional RNA. RNA into functional RNA. It is of four types. It is of four types. Four types. First, cleavage. Cleavage. What is cleavage? Larger precursor of RNA are cleaved to form smaller RNA. Larger precursor means from this active RNA is formed. Larger precursor of RNA cleaved to form smaller RNAs. Smaller RNAs. Okay, now primary transcript of ribosomal RNA, primary transcript of RAR RNA means ribosomal RNA is 45S, that is Cederberg constant, in eukaryotes. In eukaryotes. And how it go cleavage, we go through this. Okay, now it is cleaved, that is break, it is cleaved to form the following. To form the following. First of all,
45S ribosomal RNA is cleaved to 41S ribosomal RNA, and this 41 ribosomal RNA is cleaved to 32S and 20S ribosomal RNA. Now this 32S is cleaved to 20S, 28S plus 5.8S RNA, and 20S is cleaved into 18S ribosomal RNA. So primary transcript is cleaved by ribonuclease P enzyme. Primary transcript जो है it is cleaved, it is break by ribonuclease P enzyme. Ribonuclease P enzyme, ठीक है, which is an RNA enzyme. Now a primary transcript may form 5 to 7 tRNA प्रीकर्सर. ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जब फाइनली क्लिप के बाद फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट होता है, ये कितना टीआरएनए बनाता है? 5 to 7 tRNA प्रीकर्सर. ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज क्लीवेज. सेकेंड पॉइंट इज नॉट क्लीवेज, सॉरी, इट इज स्प्लाइसिंग. क्या होगा जी इसको? स्प्लाइसिंग, ठीक है. ओके, स्प्लाइस का मतलब क्या होता है? पीने वाला स्लाइस नहीं बोल रहे हैं, स्प्लाइस बोल रहे हैं. स्प्लाइसिंग मीन्स काटना. ओके, स्प्लाइसिंग मीन्स स्प्लाइसिंग इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन. अब क्या है इंट्रॉन? इंट्रॉन है नॉन कोडिंग सीक्वेंस. नॉन कोडिंग सीक्वेंस मीन्स it can't synthesize anything. Removal of intron which is in between exon. तो इंट्रॉन को जब एक्सॉन के बीच से हटा देंगे तो फिर एक्सॉन को दोबारा जोड़ देंगे. दैट इज एंड फ्यूजन ऑफ एक्सॉन. फ्यूजन ऑफ एक्सॉन टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म फंक्शनल आरएनए. To form functional RNA. मतलब मान लो ये एक RNA का चेन है. This is exon, this is exon, and this is intron part. This intron is removed by splicing enzyme, and finally both the exon are added. So this is the process called splicing. ठीक है, स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन को हटा दिया जाता है और दोनों एक्सॉन को जोड़ दिया जाता है. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टेप, दैट इज टर्मिनल एडिशन. टर्मिनल एडिशन. सी, टर्मिनल एडिशन. तो टर्मिनल एडिशन में क्या होगा? एडिशनल न्यूक्लियोटाइड आर एडेड टू द एंड्स ऑफ आरएनए. एडिशनल न्यूक्लियोटाइड. Okay, additional nucleotide are added to the, नाम से क्लियर है, टर्मिनल एंड टू द एंड्स ऑफ आरएनए. आखिरी छोर में एंड्स ऑफ आरएनए. ओके, फॉर स्पेसिफिक फंक्शन. फॉर स्पेसिफिक फंक्शन. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है?
CCA segment to tRNA to tRNA. tRNA का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफर आरएनए. और इसका बेसिक काम क्या है? टू कैरी द स्पेसिफिक एमिनो एसिड टू द राइबोसोम. जब tRNA का प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है तो ये ऐसे बनता है. ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप. एंटीकोडॉन लूप, दैट इज it is called T-Cy-C loop and this is called DHU loop. DHU loop. But this tRNA, which is a primary tRNA, is unable to transfer the amino acid because it lacks that quality. When in the terminal point CA nucleotide is added. Now this CCA end is the longest term and it is able to attract, and bind with specific RNA. Okay, so this is terminal addition. Now the last is nucleotide modification. Nucleotide modification. Okay, देखो इसमें क्या होगा. ये लास्ट स्टेप है, 4 स्टेप में से एक है. न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन में क्या होगा? दे आर मोस्ट कॉमन in tRNA. ओके, इसमें क्या होगा? मिथाइलेशन, डीएमाइनेशन, एक्सेट्रा. ओके, एक्चुअली tRNA के साथ साथ ये mRNA में भी हो सकता है. दोनों लिख लो, मिथाइलेशन, डीएमाइनेशन, एक्सेट्रा. और ये सब जब न्यूक्लियोटाइड को मॉडिफाई किया जाता है, दे आर बिकमिंग 100% फंक्शनल RNA. दैट इज कॉल्ड फंक्शनल RNA और सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट. नाउ in vitro synthesis of RNA, that is laboratory synthesis of RNA, or we can say laboratory transcription was first of all performed by Ochoa 1967. In vitro synthesis of RNA was first performed by whom? Ochoa. Ochoa in 1967. So this is the last step of transcription process in which the primary transcript, that is non-functional RNA, is converted into secondary transcript, that is functional RNA. That's all for today. Thank you.